Bismillah ar-Rahman Rahim. Welcome to my lecture number 22. Dear students, in this lecture we will discuss about the different anti-Parkinsonian drugs. So today we will talk about the carbidopa. So carbidopa, this is the drug which is used in the treatment of Parkinson's disease. Pharmacologically, carbidopa it decreases the peripheral decarboxylation of L-dopa. Carbidopa it do not cross the blood-brain barriers. Currently use PEX dose combination. Levodopa is used in a combination with carbidopa at the ratio of 4:1 by 10:1. This is the ratio through which we can the dose. This is PEX and the L-dopa plus benzodiazepids at the ratio of 4:1. So it means that levodopa it is used in a combination with benzodiazepids at the ratio of 4:1. So the advantage of combination of carbidopa, you can say levodopa with carbidopa and others. So the advantages that can increase the bioavailability of dopamine. Hence the dose of levodopa can be reduced by 75%. It can also prolong the half-life of levodopa and decrease the systemic concentration of dopamines. So hence it decrease the incidence of GIT, gastrointestinal tract side effects, so they are reduced. While the another advantage of carbidopa is it can minimize the cardiovascular complications. So cardiovascular complication may be minimized and it will cause or produce better patient compliance. Dopamine agonist, actually these are those drugs which increase the, you can say, the acetylcholine production, dopaminergic neurons, so they are responsible. It is an alternative to levodopa dopamine agonist. This will act on the striatal dopamine receptor even in advanced patient. It do not require enzymatic convergence. Bromocriptine is another agent which is used in the treatment of Parkinson's disease. It comes under the category of ergot derivatives. It do not require enzymatic conversion to active metabolites. It can prolong the duration of actions than levodopa. It can prevent the motor complication. So it's simple, the mechanism of action or mode of action of bromocriptine. So it can directly bind, partially bind with D1 receptor. So D1 receptor is, we know that dopamine 1 receptor and dopamine 2 receptor. So they have partial activity, they are partially bind with D1 agonist and strong D2. It has strong activity for D2 for dopamine 2 receptors. The clinical uses of dopamine agonists, if they are used in the treatment of Parkinsonism, it can be used alone or used as adjunct to levodopa. It serves to improve control, wearing of dose and on-off fluctuation, which I've already discussed in my lecture number 20. Another dopamine agonist, they are also used in the suppression of lactation. So it means this is safer than estrogens and acromegalies. They are also used in acromegaly in ACTH dependent tumor, adrenocortico-stimulating hormone dependent tumors. The adverse effects which are reported by the literature, there may be in the form of hallucination, confusion and vomiting may be occurs. The bromocriptine, so they are contraindicated especially in a patient having peptic ulcer, a patient having myocardial infarction and mental illness. Another drug that is called fergolides. So fergolide it is another drug which is called ergot derivatives. So it comes under the category of ergot alkaloids or ergot derivatives. Its mechanism of action is, so this is actually agonist. So it can directly bind with D1 and D2 receptor. D1 receptor is you can say dopamine 1 and dopamine 2 receptors. Which is strong affinity for especially for anti-Parkinsonism agents.
एक and pharmacokinetics, so Fergolide is it is quickly absorbed or rapidly absorbed orally, and it is metabolized in the liver by cytochrome P4 peptide system 50%. So the bioavailability undergo pass metabolism. My dear students, in my lecture number 11, I have already discussed about cytochrome P4 peptide system, that what is cytochrome and how what is the role of cytochrome P4 peptide system. So the Fergolides, so they can metabolize in the liver by cytochrome P4 peptide system. Its 50% is bioavailability undergo pass metabolism. Excretions, they are excreted in urine. The clinical use is idiopathics, you can say pharmacodynamic, we have already discussed that anti-Parkinsonism disease. So the adverse effects which are reported here, adverse effect they are reported in the form of dyspepsia, indigestion, constipation may be occur, hallucination may be occur, the drug interaction which are reported. Fergolides, so it cannot be given in a combination with cytochrome P, IA2 inhibitor like ciprofloxacin and diltiazem. So ciprofloxacin, it belongs to fluoroquinolone, and diltiazem, it belongs to calcium channel blockers. So Fergolide, it means that it is it cannot be used in a combinations. For example, it cannot be given to the in a combination with ciprofloxacin and diltiazem. Another agent that is called ropinirole. Ropinirole, it is another agent which is used in the treatment of Parkinson's disease. So the mechanism of action of ropinirole is it can selectively directly act on dopamine 2 receptor, and it has less or no activity on dopamine 1 class site. So mean it has strong activity for D2 receptor, but it has no activity or less activity against D1 class site. And pharmacokinetics, so ropinirole, so they are ropinirole, it is rapidly absorbed. Its maximum plasma concentration is generally reached and 1 to 2 hours after oral absorption. अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल को देखा जाए तो फार्माकोकाइनेटिक में हम ये कह सकते हैं कि इसका एब्जॉर्प्शन जो है वो मतलब रैपिडली होता है. मैक्सिमम इसका जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है दे आर जनरली रीच एंड 1 to 2 hours आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शंस. तकरीबन ओरल एब्जॉर्प्शंस यानी 1 से 2 घंटे के अंदर जो है इसका एब्जॉर्प्शन जो है मतलब इट कैन रीच टू इट्स जनरल सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो द मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन जनरली रीच इन 1 to 2 hours आफ्टर ओरल एब्जॉर्प्शंस. यानी अगर इसको फॉर एग्जांपल ropinirole अगर इसको ओरली इंटेक किया जाए तो तकरीबन मतलब 1 to 2 hours it will reach to its target sites. Its bioavailability is almost 50% because of its fast-passing metabolism, and all the drugs must be metabolized in the liver before it's reaching to its systemic circulations. Metabolized by the liver by cytochrome P4 peptide system to inactive metabolites. So they are also metabolized by liver by cytochrome P4 peptide system to inactive metabolites. Less than 10% they are excreted in unchanged form in urine. Ropiniroles. Therapeutic इसके clinical uses ये है कि it is used for the treatment of idiopathics, especially and Parkinsonism disorders, and you can say for early and advanced PD loans. So as we know that we have already discussed that one is idiopathic anti-Parkinsonisms, जिसके क्लिनिकल फाइंडिंग जो है ये ज़्यादातर हम इडियोपैथिक एंटी पार्किंसन डिसऑर्डर में हम यूज़ करते हैं. ठीक है. कुछ एडवर्स इफेक्ट्स है विच आर रिपोर्टेड बाय डिफरेंट लिटरेचर. ropinirole जो है ropinirole इसके जो एडवर्स इफेक्ट्स है जो रिपोर्टेड है वो डिस्पेप्सिया है, वो इनडाइजेशन इसमें हो सकता है. ठीक है. डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो सकता, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेलुसिनेशन हो सकता है. ठीक है. सो ऑल दीज आर रिलेटेड टू ropinirole. Another agent that is called Pramipexole. ये नॉन इर्गोट डेरिवेटिव डोपामिन एगोनिस्ट में आता है. ठीक है.
इसका मोड ऑफ एक्शन किस तरह ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करता है. सो इट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एर्गोट डेरिवेटिव डोपामाइन एगोनिस्ट. सो इट कैन डायरेक्टली बाइंड टू द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक डोपामाइन D2 and D3 receptor, but it is highest affinity for D3 receptor subtypes. और इसके कुछ सबटाइप्स भी हैं जिसको डोपामाइन 3 रिसेप्टर सबटाइप कहा जाता है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन प्रीमेपेक्सोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और मोड ऑफ एक्शन ये है कि किस तरह वो अपने टारगेट साइट पे पहुंच के फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी शो करेगा. सो इट कैन डायरेक्टली स्टिमुलेट द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक. ये क्या करता है, ये स्टिमुलेशन करता है. जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक डोपामाइन D2 रिसेप्टर है वो उसको स्टिमुलेट करता है, क्योंकि ये एगोनिस्ट में आता है. एगोनिस्ट हमारे पास वो ड्रग होते हैं विच कैन डायरेक्टली एनहांस द एक्टिविटी, जो एक्टिविटी को एनहांस करता है. डोपामाइन एंटागोनिस्ट वो ड्रग होता है जो ब्लॉक करता है, विच कैन डिक्रीज. वो स्टिमुलेशन नहीं करता, वो डीएक्टिवेशन करता है. इसके कुछ क्लिनिकल यूजेस भी हैं, थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं. ठीक है. सो इट इज यूज्ड एज अ मोनोथेरेपी एंड स्पेशली इन अर्ली पार्किंसनिज्म डिसऑर्डर एंड पार्किंसन डिसऑर्डर्स एज एन एडजंक्ट टू लीवोडोपा इन पेशेंट विद एडवांस पीडी. एडवर्स इफेक्ट रिपोर्टेड है इन अर्ली, स्पेशली अगर नाजिया स्पेशली पार्किंसनिज्म में अगर पार्किंसनिज्म की वजह से या पार्किंसन डिसऑर्डर की वजह से किसी पेशेंट को नाजिया है या लेट सपोज डिजीनेस है, कॉन्स्टिपेशन है, हेलुसिनेशंस है. एंड ए पेशेंट विद एडवांस डिजीज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी होता है. ठीक है. सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन मीन जिसमें आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, योर ब्लड प्रेशर एंड बीपी बिकम डाउन. सो ड्रग इंट्रैक्शन विच आर रिपोर्टेड, ड्रग इंट्रैक्शन भी रिपोर्टेड है. सो प्रीमेपेक्सोल इट कैन नॉट बी गिवन इन अ कॉम्बिनेशन सिमेटिडीन के साथ हम नहीं दे सकते, रेनिटिडीन के साथ. इट कैन नॉट बी गिवन इन अ कॉम्बिनेशन विद रेनिटिडीन, diltiazem कैल्शियम चैनल ब्लॉकर. इट कैन नॉट बी यूज्ड विद वीराफामिन एंड क्विनिडीन एंड ट्राइमेट्रिन because it can decrease the oral clearance of the pramipexole by 20%. अच्छा, इसके बाद आता है मोनो इम्यूनो ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर. इंशाल्लाह इस पे भी डिस्कशन होगा माय नेक्स्ट क्लास में. इंशाल्लाह मैं मोनो इम्यूनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर पे इंशाल्लाह आई विल डिस्कस मेनी एंड मोर थिंग दैट what are its clinical uses, indication, contraindication. Thank you so much for watching my lectures. Thank you.